So good morning everyone, welcome to Daily News Analysis by Tathastu ICS. So today for 21st July 2026 we are going to see certain topics that are going to reflect in a UPSC paper. Okay? So good morning Chandni. So how you doing? All good? पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक चल रहा है आपका? ठीक है. So आज हम देखने वाले हैं कि certain topics, okay? So 5 टॉपिक मैं आपके लिए लेके आए हैं. सो पहले चीज ये है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज. ठीक है. सो नेम चेंज हो गया, बेस ईयर चेंज हो गया. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर ऑल द थिंग्स व्हेन इट कम्स टू द कोर. एक सेकेंड बेटा, आई जस्ट कमिंग. ठीक है. Okay, am I audible right now? Can you please tell me is my voice is audible beta? Good morning Deepesh, good morning Maha. Okay, great. चलिए. Okay, sorry for the inconvenience. We will start again. ठीक है. So आज हम क्या क्या देखने वाले हैं for 21st July 2026. These are the topics we are going to see today. ठीक है. पहले हमारी टॉपिक ये होगा इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, जहां पर हमारी कोर इंडस्ट्रीज विच वी यूजुअली से अबाउट 8 कोर इंडस्ट्रीज. ठीक है. दैट हैव बीन रीनेम्ड, इनका बेस ईयर भी चेंज हो गया एंड वी आर जस्ट गोइंग टू सी हाउ इट इम्पैक्ट्स, क्योंकि हमारी कोर इंडस्ट्रीज है, एसेंशियल इंडस्ट्रीज है. अभी इतने दिन तक हमने देख लिया है देयर वेर स्लो डाउन इन द ग्रोथ, देयर वेर श्रिंकिंग, राइट. थैंक यू दीपेश, थैंक यू सो मच. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर एक्चुअली so far we have seen, right. So now एक और changes आ चुका है that we are going to see in the 8 core industries में क्या change है. ठीक है. So ज़्यादा बड़ा नहीं है, it is very crux of the topic, very small crisp topic that we are going to see today. ठीक है. So GS3 में हमारी economy paper में reflect होंगे because हमारी industries, manufacturing industries, how we are performing, ठीक है, उस हिसाब से हमारे GDP में और हमारी economic growth के लिए इन्होंने कैसे contribute कर रहा है. ठीक है. So that is why it is essential for us. And the second one is about dissent, where this editorial is talking about the state's power. Okay, the state is using the law and order and also the criminal and police law, okay, for
Good morning, Arvind. So, they are using those powers against the people who are criticizing the government. Okay, so especially this article is about TVK, which recently have formulated their government, okay, in Tamil Nadu. So, their how it is going on and what is dissent, all these things we are going to see. It will be एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग इन GS2 पेपर, ठीक है। और इसके अलावा डेमोक्रेसी में वो कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। एंड एक इंडिविजुअल का राइट्स व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कैसे तरह वो स्टेट पावर्स ने इसको कर्टेल कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा चीज हम इसमें देखने वाले हैं। सो विदाउट डाउट्स it is GS2 paper. And third one is about Canada India ties. So this editorial is talking about why good morning Bhushan, ठीक है। So it is talking about actually Canada India ties में, okay, how we are going to deepen even more, ठीक है। That is what we are going to see. Clear? So GS2 international relations, और इसके अलावा मेजरली इट इज अबाउट द डिफेंस कॉपरेशन, ओके। सो ग्लोबल वाइज कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं और ग्लोबल वाइज वो वॉरफेयर कैसे चल रहा है, उस हिसाब से इंडिया एंड कनाडा, okay, what we have to do it all together. That is what the major crux that we are going to see in this editorial, ठीक है। And the fourth one is about the footpaths. फुटपाथ के बारे में हमने कई बार पढ़ लिया है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी आए थे कि like the clear footpath is also a fundamental right under 19 and also article 21 where it is essential for life also, right? So these are the things that has been implicated. We are just going to see अभी तक, ठीक है, वो जजमेंट भी आ गया, सब कुछ है, बट अभी तक हमारी फुटपाथ्स आर बीइंग एंगेज्ड बाय कार सेंट्रिक, ठीक है। सो दैट वी आर गोइंग टू सी, वी आर जस्ट गोइंग टू रीड आउट इट, ठीक है। सो दिस विल बी इम्पैक्टिंग इन आवर GS2 पेपर, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, ये सब कुछ, ठीक है। चलिए, एंड द फिफ्थ वन इज अबाउट डेंगू वैक्सीन। सो इंडिया में पहले बार डेंगू का वैक्सीन अप्रूवल हो चुका है, ठीक है। हमारे ड्रग कंट्रोलर हैव बीन गिवन द अप्रूवल, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सी द नेचर ऑफ द वैक्सीन एंड हाउ इट इज बीइंग अप्रूव्ड इन इंडिया, ठीक है। दीज आर द थिंग्स। सो ये GS3 में हमारी आ जाएंगे बिकॉज इंडिया इज वेरी मच फेमिलियर विथ डेंगू केसेस, ठीक है। एवरी ईयर ड्यूरिंग दिस मानसून सीजन टाइफॉइड, डेंगू आर वन ऑफ अ कॉमन वायरल्स दैट वी यूज टू गेट इट, ठीक है। सो पब्लिक हेल्थ के बारे में, so this will be impacting in our public health as well, and along with that this will be impacting in our GS3, ठीक है। Clear till now? Is there any doubt? Shall we move further? चलिए, so the first one is about index of core industries, ठीक है। so अभी देख लेते कितने लोगों को याद है ये कौन सा मिनिस्ट्री ये इंडस्ट्रीज का रिपोर्ट और परफॉर्मेंसेस दे देते हैं, अंडर विच इंडस्ट्री इट कम्स, सॉरी विच मिनिस्ट्री इट कम्स। इंडिया कनाडा लोग अलग नहीं है, लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है, क्लियर, ओके अरविंद, क्लियर, ठीक है। सो ठीक है, जनरली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, राइट, will be okay under Ministry of Commerce there will be Department of, okay, Department of Performance of Industries and Trade will be giving this report, okay। so generally Chief Economic Advisor will be giving this report, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या देखने चाह रहे हैं, दो चीज है, ठीक है। पहले चीज, वन थिंग वी हैव टू कीप दैट इन माइंड इज फ्रॉम दिस एडिटोरियल, ओके, हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स, इसका नेम चेंज हो चुका है कोर इंडस्ट्रीज का, ओके, बिकॉज one more industry have been added into it, so now it is no more 8 core industries, it is 9, yes, good Arvind, ठीक है। so 9 core industries है, so इसलिए इनका नाम चेंज हो गया है इंडस्ट्री इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये पहले चीज है। so यहाँ पर हमें क्या देखने मिलेगा, how our industries are, yes, earlier 8 and now 9, very good Rangnath। so the thing is like we are able to understand the performance of core industries which actually contributes more in our economy, ठीक है। yes, very good, हम उसके लिए आते हैं, ठीक है। so
एक और ऐड हो गया है, दैट इज ऑफ आयरन कोर, ठीक है, iron ore. So this is a major thing that we have to focus. And the second thing is about the base year have been changed. Earlier it was 2011 to 12, but now it is 2020 22 to 23, ठीक है. So these are the changes that we have gone for. So अभी क्या है, high at 5%, but जहाँ पर हमें ये देखने वाले हैं, ठीक है. So there are still more some of the industries going under the shrinking basis, okay, and there are very few industries that are going under the growth, ठीक है. चलिए, India's core industrial sectors grew at 5% in June, the fastest in 5 months, as per the inaugural release of the new and updated series of इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज. जहां पर 8 कोर इंडस्ट्रीज थे, अभी इनका नाम चेंज हो गया, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है. this we have to keep it in mind, first one, ठीक है. And the Ministry of Commerce and Industry on Monday released the new series of the ICI with an updated base year, which we have talked about. Second updation is about the base year 2022 to 23 is the recent updated base year, ठीक है. So the cost, the inflation, and also the performances, and also the baskets based upon 2022 to 23, we are going to calculate our in core industries का performances, ठीक है. Very good शानू. So 8 core industries क्या क्या था हमारी? coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizers, steel, cement and electricity. अभी इनके साथ एक और ऐड होके iron ore भी ऐड होके 9 industries अभी हमारे पास है, ठीक है. Clear till now? If there is any doubt, take it. Further, the updated index has an additional sector of iron ore added to it, taking a total number of sectors it covers to 9. The sectoral weights and methods of estimation have also been updated. Within the index, the fastest growth was recorded by the iron ore, which grew 43.9%. So, हमारी growth का एक और reason है. One of the reason is iron ore industries is growing up to 43.9%, ठीक है. So this is the thing majorly. And also, okay, this growth however was likely due to statistical base effect, since the sector contracted 16.4% in June last year. Electricity, cement, steel and coal grew 9.8, 9.8 and 4.6% and 1.4% respectively. So जहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज ग्रोथ के बारे में लास्ट टाइम हमने देखा था, उस टाइम वी हैव रेड अबाउट इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ हो रहा है हमारी इंडस्ट्रीज में, और सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्रीज ज्यादा हो रहा है, एंड कोल का. सो रीजन बीइंग व्हाई वी हैव ऑलरेडी good morning Pratima Shivani ma'am is on leave, she will be joining us back very soon, ठीक है. थोड़ा वेट कर लीजिए, इन्होंने भी आएंगे, ठीक है. चलिए, so this is the major thing. So electricity, cement, steel and coal क्यों बढ़ गए हैं हमारी, we have already discussed it, okay. The first thing is about electricity और cement. electricity हमारे domestic consumption के वजह growth हुआ था. The same thing goes with the cement and steel, क्योंकि हमारी urbanization and infrastructure development के वजह हमारी domestic consumption ज़्यादा हो गए, and that has been pushing the growth for cement and steel. The same thing goes for, okay, the same things goes for what, the coal as well, ठीक है. coal based electricity was much utilized and consumed, so that is why the coal industries are also going with it, ठीक है. The index of core industries last grew faster in January 2026 when it hit a growth of 5.2% as per the new series, owing to intensive use of iron ore in the production process and its contribution to industrial development. It has been included in the list of core industries as a new item in the revised series of ICI. So यहाँ पर हमें क्या देख पा रहे हैं, iron ore we are keep on using it for हमारी industrial production. So industrial production बढ़ते जा रहा है, तो we can see that हमारी manufacturing sectors is somewhere or the other growing, first thing. And second thing is about, ठीक है, the second thing is about we are able to see that consumption be we have already discussed this notion also, right?
एक्सपोर्ट्स अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहे हैं तो इट शुड बी लाइक बोथ एक्सपोर्ट्स एंड द डोमेस्टिक कंजम्पशन शुड बी like equally managed, right? But it should not be like only the for exports alone we should not manufacture it, right? So that is what the major thing that we have to keep it in mind. So when this iron ore is giving the industrial development evidences, that we have to just understand whether it is giving the domestic consumption growth, okay? Are the industries are growing within India, or else we are like developing to exports the product, so that we have to keep it in mind. ठीक है, ये एक चीज है. एंड इसके अलावा that is why it have been added. ठीक है, nearly all the sectors relating to hydrocarbon energy and its products such as crude oil, natural gas and refinery products and fertilizers contracted. So वहां पर थोड़ा सा इनका नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, वे वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट के वजह ही है, ठीक है, मेजरली. सो दीज आर द थिंग्स दैट दे हैव, लाइक बिकॉज इंडिया में क्रूड ऑयल का सोर्सेज बहुत कम है, वी इम्पोर्ट इट, वी रिफाइन इट एंड वी री एक्सपोर्ट दोस रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, राइट? सो जब हमारी क्रूड ऑयल ही कम आ रहे हैं and the refinery products, refinery process is shrunk, so that's why the growth is also in the negative phase. ठीक है, और इसके अलावा द नेगेटिव ग्रोथ के बारे में आपने पूछा है रंगनाथ. सो इवेंचुअली इट विल बी गिविंग दैट पॉइंट, ओके? सो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ओके, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील and cement, these are the industries that they have to supposed to performing in exports, okay? हमारी इंडिया का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ऑल्सो द अर्बनाइजेशन का जो भी वो एलिमेंट्स चाहिए उसके लिए तो वी हैव टू ऑब्वियसली यूज इट, but the growth should not be depend only upon either exports or only upon either the domestic consumption. ठीक है, so there should be both the things which हमारी इंटरनल डेवलपमेंट में हो जाएंगे through the consumption and also the domestic usages. first thing, domestic utilization के through हमारी internal development हो जाएगा, और दूसरा exports के through हमारी real time, okay, the growth will be seen by the industries. These are the two things that we have to keep it in mind. ठीक है, clear till now? Is there is any doubt? Please let me know. ठीक है, so the entire crude oil related sectors, crude oil, gas, refinery products and fertilizers witnessed negative growth in June, which can be attributed to higher imports with global crude oil prices, which I have talked about this particular whom the West Asian conflict, right? So West Asian conflict के through ही है. So when there is a growth, it is a negative growth because we are paying off so much money. ठीक है, so these are the things, okay? So the entire crude oil related sectors, जहाँ पर हमारे natural gas भी हो गया, refinery products भी हो गया, ठीक है? So these are the things that we have discussed. Clear till now? अभी कोई doubt तो नहीं है? चलिए. So apart from that, okay, in June, which can be attributed to higher imports with global crude oil prices cooling off, and the export of refinery products have slowed down this month. In case of fertilizers, imports tend to increase. ठीक है, and the only energy sector to have witnessed growth was the coal sector, which grew 1.4% in June 2025, snapping a 3-month streak of contraction. ठीक है, so coal sector थोड़ा सा हमारी बढ़ते जा रहा है. So basically इसी चीज से हमको क्या क्या याद रखना पड़ेगा, but what are all the things that we have to keep it in mind? First thing, base year, okay, इनका name change हो गया है because of addition of one more industry. The core important thing is about addition of one more industry. Yes Deepesh, okay, ठीक है, clear? So these are the two things majorly, and the third thing is about the performance of the industry. Iron ore is working very well, okay, ये पहले चीज हमें याद रखना पड़ेगा. So इसके थ्रू और इसके अलावा हमारी क्रूड ऑयल रिलेटेड जो भी चीज है, दे आर फेसिंग द नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लाइक crude oil prices and the import prices are rising, and also the supply chain disruptions ke through we are facing this negative growth. All these things we have to just keep it in mind. Clear till now? So the ministry हमने एक बार देख लिया है, सब कुछ हो गया. So अगर इनका core result क्या है,
So where it will be impacting in our paper, if you see, not only in paper, in the real time, practical time कहाँ पर ये impact हो जाएंगे, in case if any of the industries is working well, okay, मान लीजिए ऐसे I have told you, हमारी internal development भी हो रहा, और इसके अलावा we are exporting the things, okay, and lesser carbon emitting steel, okay, lesser carbon emission of the cement production and everything. These products are being exported to any other country like Canada, Australia, UK, everywhere, okay. So if we are exporting these things, this will be giving us two things. One is forex अंदर आ जाएंगे, हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाएंगे, और दूसरी चीज, द वन मोर मेजर थिंग इज लाइक हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे, okay, when the exports and the consumption are improving, we will be able to build up more industries in the sense we are just going to expand in our employment, job creation, and our manufacturing sectors. So these are the practical implications. Just because of it, if our core industries are working well, we will be ending up with better economy where हमारी manufacturing industry better काम करते हैं, and also we will be having what the like हमारी job creations बढ़ेंगी, ठीक है, and weak performance of hydrocarbon sectors, yes exactly, ठीक है, because हमारे पास टेक्नोलॉजी भी कम है ना अभी फिलहाल के लिए, so we are going for hydrocarbon technology transfer from Australia and everybody, let's see, ठीक है, okay, these are the things that we have to keep it in mind, clear. चलिए नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, इट इज अबाउट अलाउिंग डिसेंट. सो यहाँ पर क्या हमें देख पा रहे हैं, द फर्स्ट इज ओके, द फर्स्ट part of this editorial is completely about the instances where how the people have been arrested just for criticizing the government, ठीक है, हमारी freedom of expression especially article 19(1)(a) gives the provisions, okay, हमें पता है हमारी वो फंडामेंटल राइट, इट हैज ए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जब वो मोरालिटी के बारे में कोई स्पीच है, और इफ देयर इज एनीथिंग दैट विल बी लाइक डिसइंटीग्रेटिंग आवर इंडियाज यूनिटी और हमारी पीस एंड हार्मनी को जो अनसेटल करता है, और इंटरनल सिक्योरिटी का, ओके, जो सिक्योरिटी बेसिस डिस्टर्बेंस करता है, वो सारा चीज को हमें क्या करना है, दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड अंडर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट. So especially when we are talking about article 19, right, freedom of speech and expression. So यहाँ पर criticizing the government is also one of a freedom of speech and expression, जहाँ पर हम एक अगर एक गवर्नमेंट गलत कर रहे हैं, वी कैन लाइक अपोज देम, वी कैन एटलीस्ट से देम बाय गिविंग अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वी कैन गिव दैट, सी दीज आर द थिंग्स that you have to change. So what it will be happening, these are things when the criticism is open, okay, when the government is open to the criticism, there are certain things that will be validated. First thing, the democracy, ठीक है, डेमोक्रेसी में कोई भी अपना ओपिनियन बोल सकते हैं, ओके, राइट और रॉन्ग को हम बता सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कीप इट इन माइंड, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, अदर द सेकेंड थिंग इज अबाउट अगर कहीं भी, ओके, एक गवर्नमेंट गलत तरीके पे जा रहे हैं, और if their policies are not formulated properly, or if there is anything wrong in that, ठीक है, we could able to tell them very easily through the criticism, so the government can work upon that, ठीक है. criticism का main meaning यही है, अगर government, the ruling party or the government, if they are going with any wrong policies, or if they are going with any policies that is not suiting the Indian constitution nature, that should be what, that should be taken into the consideration, and that is why opposition is also very much important in the parliament, ठीक है. सो अपोजिशन पीपल का काम क्या है, दे विल बी लाइक, दे आर नॉट ओनली अबाउट टू लाइक पार्लियामेंट से बाहर जाना है, लड़ाई करना है, उनका काम ये नहीं है. द कोर एक्शन ऑफ द अपोजिशन पार्टीज, ओके, in the parliament or be it legislative assembly, it is to criticize the government policies and to tell the positives and negatives of it, ठीक है. positives तो उन लोगों ने calculate करेंगे, but negatives opposite person ही calculate कर सकते हैं, right. so that is a major thing. So here they are talking about state should not be, this editorial is actually talking about state should not be like very arbitrary to impose all those criminal and the cyber security, good morning Jatan,
Okay, so those cyber security provisions to impose, it should not be imposed on the people just to stop the criticisms. ठीक है, reputation के बारे में आ रहे हैं, उस चीज में defamation का और dissentent का दोनों का फर्क बहुत ज्यादा है. Defamation अगर किसी का if you are talking about ill about anything and false reputation, false things अगर आप जाएंगे तो that comes in a defamation, but dissent is something else. ठीक है, so we have seen this already, राइट. मनियर केस में भी हमने देख लिया था. ठीक है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शुड बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन. क्रिटिसिज्म शुड बी ओपन. अगर एक गवर्नमेंट वो क्रिटिसिज्म को टॉलरेंट नहीं कर सकते हैं, इफ दे आर नॉट एबल टू गो फॉर इट, एटलीस्ट सर्टेन थिंग्स कैन बी डन. इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस इम्पोजिशन, दे कैन गो फॉर डायलॉग्स, राइट. अपना स्टेटमेंट गवर्नमेंट दे सकते हैं, अपना एक्सप्लेनेशंस गवर्नमेंट दे सकते हैं. इसके बदल it should not be a arbitrary thing and arbitrarily, and even police are working upon like without any formal complaint is being filed. Okay, suo moto power से इन लोगों ने, पुलिस ने people को arrest कर रहे हैं, and criminal offenses of cyber crime, okay, cyber bullying, जहाँ पर online cases में, ठीक है, ऑनलाइन में जो भी हम क्रिटिसिज्म डाल रहे हैं, मीम्स डाल रहे हैं, जो भी है, तो दैट इज ऑल्सो बीन कर्टाइल्ड बाय अप्लाइंग दिस साइबर क्राइम offenses on them. ठीक है, so that should not be happening. Any of the democracy, any of the government, they should be like open to, democratic government should be open for the criticism, first thing. And second thing, state should not be arbitrarily impose all those provisions for criminal offenses just for a criticism. ठीक है, criticism tolerance is very much needed. ठीक है, तमिल में एक तिरुकुरल अभी मुझे याद आ रहे हैं कि इडिपारे इल्लाद एमरा मन्नन केडुपार इलानुम केडुम. ओके, सो इडिपारे इल्लाद एमरा मन्नन केडुपार इलानुम केडुम, इसका मीनिंग ये है कि so if there is any king, okay, for example, at that time it was talking about the king only, about the government and everything. If a king does not have the people to criticize him or to tell him what is wrong in his policies and what is wrong in his certain decisions, so he doesn't need any enemy. If he is not able to, if he is not open to these criticisms, okay, it is not necessary for that king to have an enemy to come and attack and defeat him. His own, okay, his own policies and his own decisions will be making him down completely, because he is not open to the criticism. Criticisms and criticizers are very important when it comes to government, to know where we are going right and where we are going wrong. ठीक है, so these are the things that we have to keep that in mind. So यहाँ पर we have to keep that in mind कि ये सारा चीज है ना, आप GS2 पेपर में you can use it, and also in the essay papers you can use it, all those like abrasives and also all those topics you can use it over there. ये prelims based नहीं है, it is completely conceptual oriented, where you can use these instances in your mains paper. ठीक है, clear till now? These are the things. So यहाँ पर the major criticism here about TVK's new government, okay, how they have like imposing on all the criminal offenses just for criticizing. ठीक है, and एक और चीज हाँ अगर हम बोलेंगे तो nowadays meme creators and people are going beyond the limitations also. So वहाँ पर भी ऐसा fundamental duty हमारी किसी का morality के बारे में or against something morality we should not be criticizing. ठीक है, so these are the things that we have to keep it in mind. Just read about it, you will, ये हमें मेंस पेपर में काम आ जाएगा. ठीक है, so Canada and India defense collaboration for a secure future. So secure future यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, major thing, okay, अभी we are able to see there are n number of supply chain disruptions, okay, ट्रेड में इसमें इफेक्ट हो रहे हैं, इकोनॉमी में इफेक्ट हो रहे हैं, एंड द वॉरफेयर एंड ऑल्सो द नेबरिंग डिप्लोमेट्स, ओके, the relation with among the countries. Okay, so these are the things that has been more of it getting affected. ठीक है, and what we have to do is, here it is a very crisp topic where they are talking about, okay, India and Canada, they both are going for certain
ties. Okay, we have already talked about Canada's ties and everything. Recently, yesterday's newspaper also, they have said that ki India's students who are going for Canada for studying and masters and everything, okay, their numbers have been reduced because of visa process and all those things after Khalistan movement. ठीक है, so ये सारा चीज हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. So these kind of ties and the relations are helping us. ठीक है, जो strained relations हैं जहाँ पर हमारी relations are getting bad, okay, इसको बैंड-एड करने का और to recover it, we are going for these kind of ties. So यहाँ पर people to people centric relations भी it will be like people to people centric में क्या है, employment का, education का, जो भी लोग जा रहे हैं वहाँ पर, इन लोगों के लिए it will be beneficial, okay, and it will be easy for them for the mobility. And the second thing, due to this kind of ties and everything, two countries relations will be growing up, and that will be ending up in what, giving more and more opportunities. जैसे कि India और Canada, they are sharing their markets, and also Canada is right now to give us certain technologies of cleaner energy, hydrocarbon, and also now this editorial is talking about deepening even more in the industries of where the aerospace, okay, the defense, and also the co-production and development of those defense equipments. Okay, not only with the we are not going to stop with the military collaborations and the joint military exercises. Apart from that, we are going to co-develop and co-design all those defense equipments, and we are going for this aerospace technologies as well. Okay, so this is the major thing that they have talked about here. Okay, Canada is seeing an historic shift for our country, one that opens new opportunities for relations between Canada and India. Okay, so Canada's leading defense, security and emerging technology. Emerging technology nothing है आजकल AI, semiconductors and critical minerals. Okay, so these are the things that is very essential, and the technologies of AI and semiconductor are the emerging technologies. Okay, उसके लिए हमें क्या चाहिए, critical minerals भी चाहिए. Canada is ready to give us certain critical mineral resources to India as well. ठीक है, clear? See, the whole concept is within this only. एक और बार हम इसको जस्ट एक स्किम थ्रू हम कर लेते हैं. ठीक है, चलिए. So the very nature of war is rapidly evolving, driven by the proliferation of drones, autonomous systems and weapons in orbit. ठीक है, so conflicts could emerge closer to our borders than before. A new weapons are reducing the distance that separate us from them. The world has changed and Canada must change with it. So यहाँ पर अभी देखेंगे तो drones attack बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, right? So as we have seen in the China's aerospace growth, वहाँ पर उन्होंने blackout कर रहे हैं लेजर के थ्रू. they are like completely blurring the vision of the satellites and everything. So it is warfare is even more like land के through, water के through पहले चल रहे थे, advanced level पे warfare चल रहा है, where it is in the air space and also the एटमॉस्फेयर में भी हो रहा है, और उसके अलावा इट इज गोइंग बियॉन्ड द स्काइज वेयर स्पेस में भी ये वॉरफेयर चल रहे हैं. ठीक है, so that is what. So emerging warfare और emerging technology के साथ साथ what we have to do is like critical minerals is like nickel, cobalt. ठीक है, so these kind of elements that will be having that will be called as critical minerals, जिसके थ्रू हमारी कैसे बोलूं, इसके थ्रू हमारी देर वेरी लेस अवेलेबिलिटी, बट इनका वो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द क्रिटिकल मिनरल्स इज अबाउट. ठीक है, चलिए. सी, दे विल नॉट बी कैसे बोल सकते हैं. ठीक है, तो देर आर सर्टेन मिनरल्स दैट विल बी इजीली अवेलेबल. आयरन, ओके, जैसे कि चीज विल बी पोटेशियम, और दीज मिनरल्स विल बी लाइक easily available. ठीक है, critical minerals they will be available in one particular area only. It will not be easily available, and they are very crucial for certain sometimes environment को balance करने के लिए they are very much important. आजकल इसको explore करके, critical minerals को explore करके we are able to get them, लेकिन इनका usages कहीं जहाँ पर भी use हो रहे हैं. ठीक है, so that is what the thing is. Okay, चलिए, come back to it. So 6 V's, okay, so along with emerging warfare, right now Canada is also trying to join this warfare. ठीक है,
जहाँ पर even though the warfares of space and everything we are just going to develop and we are going to uh, emerge, ठीक है. सो वहां पर इंडिया और कनाडा का टाइज भी थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं. चलिए फटाफट देख लेते हैं. So conflicts could emerge closer to our borders than before and new weapons are reducing the distance that separates us from them. ठीक है. So the world has changed and Canada must change with it. This is why 6 weeks after forming the government we announced our ambitious plan to rebuild, rearm and reinvest in the Canadian armed forces. ठीक है. So यहाँ पर जो भी वो रीइन्वेस्टमेंट और रीबिल्ड हो रहा है वो इंडिया के साथ भी हो सकता है. ठीक है. So that is what the ties deepening about. ठीक है. When the world is changing and Canada-India defense collaboration can translate into a strategy for a secure future. अगर आप देखेंगे why it is strategic secure future, because India and Canada we both are a middle path lovers. ठीक है. जहाँ पर भी कोई भी दिक्कत आ रहे हैं we used to stand for both the parties. ठीक है. जहाँ पर positives दोनों साइड होता है उसके लिए हम खड़े करते हैं. We will be standing for them, and if there is any disadvantages or any negatives that is happening from the both the sides we will be standing against it. ठीक है. So one of the commonality that Canada and India have is this. ठीक है. Clear? चलिए. So इसके अलावा और क्या है? So the bilateral defense engagement. ठीक है. So we are going to see it in a while. Before that we will be seeing it. Okay. Mr. Carr ne announced that Canada is on track to spend 5% of its GDP on defense in by 2035. Okay. In March we already surpassed 2% of the GDP, placing Canada among one of the 10 largest economies in the world. Okay. So World Economic Forum's annual meetings in Davos, there has been a rupture in the world order, or as the Prime Minister Narendra Modi has said, we are living through a decade of crisis. So the reasons why we are going for the strategic सिक्योर फ्यूचर, जहाँ पर हमारी वो एरोस्पेस एंड जो इवॉल्विंग वॉरफेयर के साथ साथ हम क्यों जा रहे हैं, these are the reasons. ठीक है. Bilateral defense engagement in this changing world, defense cooperation between Canada and India has become crucial and we have already taken steps to bolster it. Most recently we asserted defense advisors in both Ottawa and Delhi. Okay. So अभी हम क्या करने वाले हैं, we are just going to read of it. Canadian and Indian navies participated in the rim of the Pacific Indo-Pacific rim that we have read about it, right? So rim of the Pacific exercises and Talisman Shabir exercises. In June this year, a delegation from India's National Defense College visited Canada. This will allow India officers to have direct exchanges with military colleges and bases in Canada. So joint military bhi exercise bhi honge yahan par. We will be learning from them, and along with that we will be having that is why we are calling on natural partners such as India to participate in co-development, subsystem manufacturing and sustainment of those innovations. ठीक है. सो वहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजीज नेक्स्ट जनरेशन का टेक्नोलॉजीज एमर्ज हो रहा है, लाइक एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज एंड ड्रोन इनोवेशन, हम वहाँ पर इंडिया का स्टूडेंट्स भी वहाँ पर जाएंगे, वो मिलिट्री कॉलेजेस में साथ में पढ़ेंगे. सो को डेवलप्ड इक्विपमेंट्स हो जाएंगे. ठीक है. स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन. ओके. सो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रियल बेस, वो कनाडा का एक और स्ट्रेंथ है. ठीक है. एंड कनाडा इज वन ऑफ ओनली अ फ्यू कंट्रीज with a full spectrum aerospace sector, while India's domestic aviation industry is the third largest domestic market in the world. So यहाँ पर we both are having हमारी इंडिया के पास है वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट फॉर दोस डोमेस्टिक एविएशन, ये पहले चीज है. एंड कैनेडा इज having a stronger base when it comes to the aerospace sector, so we are going to give them the runways and everything. okay. हमारी मार्केट उनके पास हो जाएगा और इनके टेक्नोलॉजीज हमारे पास आ जाएंगी. ठीक है. So Canada is a research and development powerhouse, while India is focused on advancing innovation capacity and high-end manufacturing. यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, that we are like
एबल टू अंडरस्टैंड दैट कनाडा के लिए बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D के लिए बहुत ज़्यादा एम्बिशन है, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया भी साथ साथ में करेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वी विल बी गेटिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, ओके, वी विल लर्न फ्रॉम देम एंड हमारी खर्चा R&D में बहुत कम हो जाएंगे व्हेन इट कम्स टू अ कोलैबोरेटेड मैनर, ठीक है। क्योंकि कनाडा के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इट विल बी ऑब्वियसली इकोनॉमिकली फीजिबल फॉर इंडिया टू गो फॉर दिस को डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन व्हेन इट कम्स टू R&D, ठीक है। So these are the things. Canada strengthens in advanced components for satellite technology, and space robotics can complement India's strength in low-cost platforms. ठीक है? Constellation system can have application meeting India's aim of advancing its naval capacity in the region. Critical minerals are the building blocks of defense technologies. ठीक है? So critical minerals का भी right now Canada is about to give us like I think 31 critical minerals if I'm not wrong. ठीक है, यहाँ पर वो mention कर रखा है, ठीक है। critical minerals are the building blocks of defense technologies, another area where Canada and India can expand their partnership. And also amid the crisis in West Asia, national security and economic security are inextricably linked, जहाँ पर Canada has vast geological reserve of 31 critical minerals from cobalt to helium. Canada holds the 10th largest reserves of rare earth elements also. So when we are moving towards this cleaner energy, hydrocarbon technology, and also the nuclear reactors, सिविलियन पर्पस के लिए जो यूरेनियम हमें चाहिए, ये सब कुछ हमारे पास हमें कनाडा से भी हम ले सकते हैं, सो दैट हमारी ईवी व्हीकल्स का एम्बिशन, ठीक है, क्लीनर एनर्जी ट्रांसिशन का एम्बिशन, और इसके अलावा वी विल बी हैविंग सेल्फ सफिशिएंसी व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिसिटी दैट विल बी इन अ वेरी क्लीनर मैनर, ठीक है। सो अगर हम ऐसे तरीका से हम जा रहे हैं, कनाडा की साइड से भी टैरिफ्स का वो रिलैक्सेशन मिल जाएंगे हमारे पास, और इसके अलावा we will be getting more and more market opportunities, क्योंकि Canada, UK, these kind of nations are very they will be following these things very strictly, ठीक है। when it comes to regulations, these are very strict in manner, right? so अगर हम ये इनका जो भी वो स्पेक्ट्रम है इसको हम कंपाइल कर सकता है कि the carbon less carbon emitted products and some things, okay, so वहां पर हमें मार्केट भी मिल जाएंगे and we would be able to expand our economy, ठीक है। clear till now? and Canada is additionally, okay, यहाँ पर the third largest recoverable resources of uranium and 5% of the world's tungsten reserves. Additionally, Canada is the second largest producer and exporter of uranium globally with 24% of global production in 2024. Canada has embarked on a strategy to diversify its trusted partners. For India, there is a need for reliable partners such as Canada to reach its own economic and national security goals, where we अगर यूरेनियम इतना बहुत बढ़िया से कनाडा के पास है तो दे कैन गिव इट इन लाइक फ्लेक्सिबल प्राइसेस और कंसेशन प्राइसेस में हमें दे सकते हैं। इंडिया कैन यूज देम क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रिएक्टर्स हैं। लास्ट एडिटोरियल्स में जो हमने पढ़ लिया है, राइट नाउ इट इज टाइम फॉर इंडिया टू डेवलप इट्स ओन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड एवरीथिंग। वहां पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बहुत अच्छा सा हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इट इन माइंड। सो उसके लिए जो गोल्स और एम्बिशियस गोल्स दैट वी आर एमिंग फॉर, उसको अटेंड करने के लिए दिस काइंड ऑफ रिलेशंस आर वेरी मच नीडेड। इट इज नॉट ओनली अबाउट इंडिया को ही कनाडा चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। कनाडा को भी इंडिया को चाहिए बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ अ सॉफ्ट पावर इन द वर्ल्ड कंसिडरेबली, ठीक है। एंड इसके अलावा इंडियाज ग्रोथ एंड द इकोनॉमी इज वेरी वाइब्रेंट राइट नाउ, ठीक है। एंड द मार्केट दैट इंडिया पोसेस, ओके, एंड अलोंग विद दैट the availability of certain things in India, it is very much crucial for Canada to go for, and India is one of a reliable partner for the global countries, ठीक है। so Canada will be obviously choosing us, ठीक है। so shared legacy, which where we have talked about Royal Canadian Air Force के साथ वो वर्ल्ड वॉर में हुआ था, so वो वाला चीज वगैरह उन्होंने बता दिया, ठीक है। so it is about, you can use it for international relations,
हमारी कनाडा और इंडिया का जो टाइज पहले कैसे था वो बीच में स्ट्रेन कैसे हो गया, एंड टू like rebuild those relations what we are all going through, and in what are all the areas that we are focusing right now: airspace, okay, drones, space technologies, the military, naval, and also यस रिम्पैक्ट नेवल एक्सरसाइजेस, ठीक है ये। और इसके अलावा वी आर गोइंग फॉर द रेयर अर्थ मटेरियल्स एंड द क्रिटिकल मिनरल्स का शेयरिंग एज वेल। सो यहाँ पर को डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑल्सो को प्रोडक्शन ऑल्सो विल बी हैपनिंग व्हेन इट कम्स टू द डिफेंस मैकेनिज्म्स एंड द ड्रोन सिस्टम्स, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू सी। एंड द नेक्स्ट वन इज अबाउट रिक्लाइमिंग फुटपाथ, टेकिंग सिटीज बैक फ्रॉम कार्स। सो यहाँ पर okay, so this we have read multiple times regarding the what the footpaths, right? So footpath हमारे लिए इसलिए बना जाए हैं, हमारी पेडेस्ट्रियंस पीसफुली वॉक कर सकते हैं, ठीक है। रोड्स में मेजर ऑफ व्हीकल्स विल बी गोइंग ऑन, तो साइड बाय साइड सेफ्टी पर्पस के लिए फुटपाथ्स हमने मतलब दैट इज अ meaning of footpaths, right? So that is why it is have been made. But the problem here is more than people, those footpaths are used as a pedestrians बहुत कम use कर रहे हैं, but के certain issues that we are actually currently facing up. First thing is public health, जहाँ पर लोगों को like पैदल करने का, like there is no way for walking safely in the roads, first thing. Second thing, road accidents बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं इंडिया में, almost like if you see, I'll show you the data also, ठीक है। Okay, I'll show you the data for it, ठीक है। रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, एंड there were like 60% of the road, 40 to 60% of the road accidents because of these pedestrians don't have footpath space to walk safely, ठीक है। So these this is the second thing, and the third thing that we are going to see here is about one thing which is very necessary, हमारी infrastructure, it is not everything. It's a puppet of USA. Bhushan, we cannot say that actually. See, USA के सामने अगर किसी को भी देखेंगे तो they will be having a lesser power, ठीक है। So economies के through, defense के through, if you see, they have the one of the best armed forces and best economy, right? So उनके साथ अगर हम opposition दे रहे हैं तो then it is like kind of a thing where we are able to understand USA कुछ भी कर सकता है, they can come and attack and they can wipe out completely. So these are the things that we have to focus, ठीक है। Coming back to this, so health risk है यहाँ पर, first thing, so non-communicable diseases raise होने के लिए one of the reason is this, we don't have safe spaces to walk, ठीक है। public health, क्योंकि non-communicable diseases अगर आप देखेंगे तो cardiac diseases, hypertension, obesity and diabetics, all these needs, okay। mental health के लिए भी there should be coordination with your body where you will be having the walking, at least walking, cycling, jogging, जो भी है you have to engage with your body, ठीक है। ये पहले चीज पब्लिक हेल्थ का है। रोड एक्सीडेंट्स आई हैव टोल्ड यू, एंड देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम यही है, इट इज बीइंग गवर्नेंस का इशू है, क्योंकि अगर फुटपाथ्स इज फॉर पेडेस्ट्रियंस एंड इट इज बीइंग यूज्ड एज अ कार पार्किंग सिस्टम, सो वहां पर क्या करना है, द गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन एंड दे हैव टू टेक द नेसेसरी एक्शन टू स्टॉप दोस कार पार्किंग्स इन दैट एरिया, ठीक है। So it is not only about the infrastructure something, this editorial is saying that the free and safe footpaths are one of the thing that is needed for very core essential thing of fundamental right, ठीक है। clear till now? This is there any doubt? So these are the things that they have discussed here, ठीक है। Few sights are more ordinary in an Indian city than a pedestrian being pushed off a footpath and onto the road. A mother holding a school bag in one hand and a child in the other walks around a parked car. An elderly man tests a broken footpath before stepping down onto the road. So यहाँ पर हमारी फुटपाथ का कंडीशंस ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारी मेजरली थिंग्स either it is damaged, either it is occupied by some other vehicles, or else it will be not in a proper condition where we can use it, ठीक है।
So these are the things that we have to keep it in mind. So Manier Ilaz and Sheikh Rais केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था? सो walking on demarcated footpath is a fundamental constitutional right protected under Article 19 1D and Article 21 of the Constitution, where right to life is also coming under this. ठीक है? And it observed that pedestrians have a right to safe footpaths and footways, and directed states and union territories to frame policies and guidelines for their provision and maintenance. So state यहाँ पर municipalities के through they have to maintain the quality of those footpaths, and they have to maintain those like whenever it is needed. MG नरेगा, earlier it was MG नरेगा, right? So उनका काम ये है कि पहले they used to like one of a work they used to do is like repairing all those footpaths. ठीक है? अभी दिल्ली में भी कहीं जहाँ पर हुए थे. So these are the things, it is a responsibility of municipalities and union territories. ठीक है? तो ये हमें याद रखना पड़ेगा. And the timing could not be more urgent. India is becoming less active precisely when it needs the moment the most. Health risk factors and diseases such as diabetes, hypertension, fatty liver disease and obesity are rising rapidly as reportedly by every newly available population health data set. So जहाँ पर हमने देखा था कि we are like having keep on accumulating all those health disease मतलब non communicable diseases and health impactful diseases just because we are not moving towards anything. ठीक है? So that is the major thing. So WHO India Physical Activity Profile 2024 estimates that 49.4% of Indian adults do not meet the recommended levels of physical activity. Among women, the figure is 57.2%. Among children and adolescent age 11 to 17 years, it is 74%. Okay, so यहाँ पर हमारी physical activity we are lacking, be it men, women और the children. अभी आजकल गिग वर्कर्स और द ग्रास रूट लेवल वर्कर्स के अलावा बाकी सब लोग का काम ऐसा है बैठ के काम करना. एंड इसके अलावा जब भी हम घर आ जाते हैं वी आर इनटू द फोन्स, वी आर इनटू द टेलीविजन्स. ओके, वो बैठ के ही हम काम कर रहे हैं. वी आर नॉट इवन मूविंग एट ऑल, राइट? So that is one of the reason where we are ending up with those chronic health diseases. And WHO also have witnessed that nearly 49% of Indians they are exposed to these kind of health impacts because of not moving. ठीक है? So ये हमारे पास एक चीज है. WHO recommends at least 150 minutes of moderate intensity physical activity each week for adults. For most citizens, this does not mean gym memberships or elite fitness routines. It means having the ability to walk safely to a bus stop, school, market, clinic, metro station or park. So हमारी major thing ये है कि we are India have another one more ideology where we are reducing the like private transport. Instead we are promoting the public transport. Even walking and cycling is also being promoted for healthier environment, right? But the problem here is अगर हमारे पास पैदल में जाने के लिए और साइकिलिंग के लिए सेफ रोड्स अगर नहीं है तो हमारे पास, then what is the पर्पस ऑफ हैविंग दैट बिगर एम्बिशंस को रखना बहुत अच्छी चीज़ है, बट इसको अचीव करने के लिए भी थोड़ी सी हमें वर्क ऑन करना पड़ेगा, राइट? सो वन अमंग दैट एग्जाम्पल इज दिस, हमारी हेल्थियर एवरी सिटी विल बी हैविंग लाइक ए नंबर ऑफ पार्क्स एंड एवरीथिंग टू एंश्योर द व्हाट पब्लिक हेल्थ एंड ऑल्सो द area where we can go for all those walking and everything, right? So अगर इतना infrastructure related things, इतना चीजें हम कर रहे हैं, but if it is curtailed because of something else, the ambition will not be achieved properly, right? So उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ambitions को achieve, the means of achieving the ambitions also have to be taken into consideration. So जहाँ पर हमें easily those goals को achieve कर सकते हैं, ठीक है? So they have talked about the mental health. There are preventive medicine laid in stone, and usable pavement allows children to walk to school, office goers to use public transport, older adults to remain mobile, and women to move safely. Walking improves blood pressure, insulin sensitivity, weight control, mood, sleep, and joint function. It is the simplest health habit available to the largest number of citizens, yet we in India have made it
difficult and dangerous. Many Indians would prefer to use cars and scooters less if cities offered safe, continuous, shaded and footpaths. So यहाँ पर problem ये है कि safety concern है, not only about the footpaths, the areas का safety है. So that is showing that, okay, that is showing that there is a issue. ठीक है, क्लियर टिल ना? देयर इज एनी डाउट? सो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है? रोड सेफ्टी, ओके, पब्लिक हेल्थ के लिए वो वॉकिंग इज वेरी स्मॉलर स्टेप बट दैट गिव्स अ ह्यूज इम्पैक्ट. वो करने के लिए हमारे पास वो फुटपाथ्स में अवेलेबल नहीं है, फुटपाथ्स अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ दोज लाइक इट इज बीन ऑक्यूपाइड बाय द कार ओनर्स. ठीक है, एंड यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स के बारे में. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ओके, रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2024 रिपोर्ट में हमें क्या मिला था? फाउंड दैट टू व्हीलर राइडर्स एंड पेडेस्ट्रियंस टुगेदर अकाउंटेड फॉर नियरली 67% ऑफ रोड fatalities is deaths, okay, and with 1.28 lakh deaths among these vulnerable groups, the national NCRB, National Crime Records Bureau 2024 data place the numbers at more than 1.1 lakh and they share at least 60% of road accidents because of all those acquired footpaths. ठीक है, पब्लिक के लिए जाने के लिए वो पीसफुल फुटपाथ्स नहीं है. ठीक है, the pedestrians and two-wheelers riders remain India's most vulnerable road users. Every time a footpath disappears, the road becomes a contest between flesh and metal. Okay, so it is showing that accidents are frequently happening. Okay, so उसको हम कम करना है तो orderly shared streets, so demarcated footpaths should be there and footpaths should be used only for the pedestrians, not for those two wheelers जिनको वो ट्रैफिक स्किप करना है और जिनको वो रेड लाइट क्रॉस करने के लिए they don't want to wait, right? I'll coming to the challenges. जिनको जो बाईपास करके जाना है उसके लिए फुटपाथ यूज नहीं करना है. इंस्टेड इट शुड be a space where mobility will be easy for women, children, the elderly people as well. जो भी उन लोगों ने पैदल में चल रहा है उनके लिए it should be there. ठीक है, so apart from that these are things you can just read about it. ठीक है, right to walk वगैरह उन्होंने बता दिया. So policy action अभी urban planning में और municipalities में क्या है? They are going with certain things where they have to focus upon like infrastructure development and everything. But the thing is like municipalities also have to maintain them a proper फुटपाथ्स है कि नहीं, डैमेजेस है तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा. और इसके अलावा जो जो कार्स हैं वो इलीगली पार्क्ड है वहाँ पर उनको हटाना पड़ेगा. दे हैव टू बी गिवन विद द फाइन्स एंड एवरीथिंग. सो दीज आर द थिंग्स दैट दे हैव मोस्टली टॉक्ड अबाउट. चैलेंजेस अगर यहाँ पर आएंगे तो सिटीजन्स इज द मेजर चैलेंज इफ यू सी. ठीक है, so just think about it. Citizen mindset is a major challenge, and the second thing is about like monitoring for municipalities and everything. And along with that, one of a major challenge for this kind of a thing is like who is going to take the accountability. ठीक है, so that is the thing. So challenges यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू अगर हम देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स एंड द मॉनिटरिंग. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द like keep on we are repairing it. And the thing is like अगर citizens इसको properly use कर रहे हैं, इसको damage नहीं कर रहे हैं, then it will be easy for the government also go for multiple projects. अगर the government is being engaged with one particular project where it is keep on repairing and repairing, that is one of a major thing. ठीक है, so people's mindset have to be changed. Pedestrians should be like going for it and penalizing with the minimal charges or minimal things have to be given for those car parkers. ठीक है, so that is one of the things that we have to look forward. ठीक है, the last one फटाफट इसको खत्म कर लेते हैं. इंडिया अप्रूव्स फर्स्ट डेंगू वैक्सीन फॉर पर्सन्स एज्ड 4 to 60. यहाँ पर ये है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI. Okay, they have approved this companies Takeda Biopharmaceuticals India's Q Denga TAC 300 का
सॉरी टैग 003 का वैक्सीन। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका नेचर है टू, इट इज अ वैक्सीन विच विल बी प्रिवेंटिंग द डेंगू, ठीक है। सो वन थिंग यू कैन कीप दैट इन माइंड इज from the age 4 to 60 they can take this dosages. It will come in two dosage, okay, and they are operating right now in 43 countries, asia, asia may, and there are certain areas where they have been like successfully given this vaccines, okay. There were n number of clinical trials and also 28,000 people के साथ इन्होंने ट्रायल किया है. It was working, efficacy भी 80% दे रहे हैं, so it is a very good efficacy is there, ठीक है. So पहले चीज हमें याद रखना, what are all the features of this. फर्स्ट थिंग अगर हम देखेंगे तो ओके अभी अप्रूवल हो गया है इंडिया में, इसका एफिशिएंसी इज आल्सो वेरी गुड. पहले कंपनी का नाम थोड़ा सा जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू नो द वैक्सीन नेम. क्यूडेंगा, ओके, टैग 003. सो इसका ये है 2 डोसेजेस होंगे, 4 to 60 year old. Okay, this age group can take them, and there is no precautionary there is no previous histories are needed. मुझे डेंगू हुआ कि नहीं है, अगर मेरे पास ऑलरेडी डेंगू हो गया तो मैंने ले सकते हैं कि नहीं, अगर मैं आई एम नॉट ओपन टू डेंगू कैन आई टेक, वो वाला क्वेश्चन आपको जरूरत ही नहीं है. यू कैन स्ट्राइट अवे गो फॉर दिस डोसेज, ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ अ थिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, इंडिया का नेचर, इंडिया में इट इज वेरी मच नीडेड फॉर द डेंगू मेडिसिन, बिकॉज अभी तक इंडिया में वी हैव क्योर्ड द सिम्टम्स, ठीक है. हाई फीवर होगा, थ्रोइंग अप होगा, राइट, वॉमिटिंग, नोजिया सेंसेशन, एंड चिल body will be there, highest temperatures will be there in your body, you cannot take anything, intake anything, आपका knees में दर्द होगा, and there will be lot of physical barriers you will be facing it, right. So उसका सिम्टम्स के लिए हम क्यों करते हैं, मेनली थ्रू एंटीबायोटिक्स एंड ऑल्सो मेजरली थ्रू गिविंग लॉट ऑफ फ्लूइड्स टू बॉडी वी विल बी क्योरिंग इट. सो बट बाय टेकिंग दिस वैक्सीन व्हाट विल बी हैपनिंग, अ प्रिवेंटिव मेथड विल बी हैपनिंग. सो ये कैसे है, वीकेंड लाइक इट इज अ लाइव वैक्सीन, जहाँ पर ये इनका वायरस है ना जो वो डेंगू क्रिएट करता है, उसका वीकेंड पोजीशन हमारी अंदर इंजेक्ट हो जाता है, एंड हमारी इम्यून सिस्टम इसके सामने लाइक इट विल अटैक द weakened antigen, okay, the foreign body, and we will be getting the immunity against it. So that is how this dosage actually works, ठीक है. So that is called live एटीन्यूएटेड ट्रिवेलेंट वैक्सीन, जहाँ पर लाइव वो वीकेंड पोजीशन में जो वो वायरस हैं और जो भी वो फॉरेन बॉडी दैट क्रिएट्स डेंगू दैट विल बी इंजेक्टेड इन अस, हमारी इम्यूनिटी इसको अटैक करेंगे. थ्रू दैट वी विल बी गेटिंग आवर बॉडी, आवर इम्यूनिटी सिस्टम विल बी अवेयर अबाउट इट, एंड वी हमारी बॉडी में भी वो इम्यूनिटी बन जाता है इसके अगेंस्ट, ठीक है. So it is going to treat all 4 different types of dengues, ठीक है. So if you could see here, vaccine has been approved for the prevention of dengue in individuals aged 4 to 60. Okay, dengue is a live attenuated prevalent vaccine designed to provide protection against all 4 dengue virus serotypes, and is administered as 2-dose regime, which I have told you, right, with doses given 3 months apart. फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में 3 महीना का गैप होता है, ठीक है. According to the company, the vaccine can be administered irrespective of whether an individual has a previous dengue, okay, and does not require pre-vaccination screening. This also we have discussed. And significant public health challenge in India, क्योंकि monsoon अभी आ रहे हैं, right. There is lot of water stagnation will be there, water contamination will be there. समटाइम्स वो ये मानसून सीजन की वजह ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा चलता है, राइट. इवन इन समर्स ऑल्सो वी विल बी हैविंग बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, ठीक है. सो इट विल बी देर आर सर्टेन कंडीशंस दैट इज अवेलेबल इन इंडिया. इफ यू सी India's third largest country who are like exposed to dengue kind of malaria, chikungunya, these kind of
डिसीजेस के लिए इंडिया इज हैविंग अ वेरी बिग एक्सपोजर, ठीक है. सो अभी as I have told you, monsoon there will be raining will be happening, ठीक है. Pit holes, okay, और इसके अलावा there will be n number of areas where these waters will be stagnated, right. And इसके अलावा humidity के साथ ये it will be a favorable condition for those mosquitoes to lay eggs, and it will be hatching in a rapid way, and they will be attacking other people, and it will be spreading lots and lots of dengue cases, right. So abhi getting pre-vaccinated, it is very good, and also it will reduce the dengue spreading nature, okay. And also where reported cases have increased nearly 20 years, okay. It is not a one time or two or twice, it is like 11 times it have been increased the cases, okay. India accounts for nearly one third of the global dengue burden, although modeling studies suggested that actual number of infection is substantially higher than reported. So report में जो आ रहा है वो बहुत कम है, but when it comes to the real time things है, it is much higher, ठीक है. The clinical trials, as I have told you, this Takeda's global clinical development program, इसमें 19 इसमें phase 1 phase 2 and phase 3 clinical trials involved था. So it was like around 43 countries they have actually gone with the trials, and also they have been approved in those countries, ठीक है. So in testing over 28,000 participants in dengue endemic and non-endemic regions. Endemic, you know, like it is created in that particular area only. Non-endemic is it will be spreading to other areas, spreading from other areas, okay. The company's pivotal phase 3 trial enrolled more than 20,000 participants across 8 dengue endemic countries. According to Takeda, the vaccine demonstrated an efficacy of 80.2% against virologically confirmed dengue 12 months after the second dose, and 90.4% efficacy against dengue related hospitalization at 18 months, okay. Efficacy, as I have told you, it is much better. And also the approval in India was also supported by a phase 3 clinical trial conducted among participants of kin ke 4 to 60 years ka, okay. And the company said that the study found the vaccine to be safe, well tolerated, and immunogenic in children, adolescents, and adults. So all the age groups will be having a safe vaccine. So इसका impacts मतलब side effects वगैरह कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है. So it is been approved in 43 countries across Asia, Latin America, and Europe with more than 32 million doses distributed. So अगर आप वो यूरोप के बारे में देख रहे हैं तो वी नो R&D में उन लोगों ने कैसे आगे हैं, और इसके अलावा हाउ दे आर लाइक डूइंग वेल विद द थिंग्स. स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस वहां पर भी है, राइट. सो यूरोप अप्रूव कर रहे हैं तो व्हेन वी कैन सी द क्वालिटी. बट अगेन इंडिया शुड नॉट बी टेस्टिंग एरिया. ऑलरेडी वो टेस्टिंग है, इट हैज द एफिकेसी एंड एवरीथिंग, सो नाउ इट हैज बीन अप्रूव्ड. बट जनरली व्हेनेवर देयर इज एनी pharmaceutical medicines or any other रिलेटेड, दिस हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी वो मेडिसिन आ रहे हैं, इंडिया शुड नॉट बी टेस्टिंग एरिया, ठीक है. जहाँ पर वो अप्रूव्ड हो रखा है, ऑलरेडी सक्सेसफुल चीजेस हैं, वहां से हमें यहाँ पर अप्रूव दे सकते हैं, बट वी कैन नॉट गिव इंडिया एज अ टेस्टिंग पीरियड, ठीक है. सो दैट इज इट विथ टुडेज आर्टिकल. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. And I think Bhushan have asked about the genetically modified crops, right? So इनका gene alter करते हैं, ठीक है. So they will be resistant to the pest, and also thank you so much Arvind, ठीक है. So they will be resistant to the pest, and they will be, अगर मान लो एक शुगर कैन ग्रो करने के लिए 50 लीटर्स चाहिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इन केस इफ इट इज नीडेड, अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है, सो दे विल बी टेकिंग वेरी लेस वाटर, बट इनका जीन ऑल्टर कर रहे हैं, सो इनका क्या कर सकते हैं, दैट विल इम्पैक्टिंग ऑन द हेल्थ, ठीक है. मैम वन रिक्वेस्ट प्लीज, रंगनाथ प्लीज टेल मी. थैंक यू जतन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. एंड रंगनाथ आपका रिक्वेस्ट बता दीजिए. Okay, so let Raghunath type his request. Till then, please do read the newspaper. Don't skip reading the newspaper. Just skim through it. ठीक है. Monsoon sessions शुरू हो गया है कल से.
ठीक है, उसके बारे में एक बार देख लेना कि पार्लियामेंट कब कब शुरू हो जाता है, एंड व्हाट आर ऑल द फंक्शंस व्हाट दे विल बी डूइंग ड्यूरिंग मॉनसून सेशन. ओके, ऑल दीज थिंग्स यू कैन रीड अबाउट इट. ठीक है, चलिए. Rangnath, I'm just waiting for your request. So just pop out, then we can wind up. चलिए, इसके अलावा किसी को भी कोई भी डाउट है? Is there is any doubt? Anybody is? Please note down some points for me so we can. Sure, sure, Rangnath, we can do it. Okay, don't worry. Is there is any other doubt? चलिए, आज हम एक बार इसको दोबारा बार पढ़ लेना. You will get to know about it. नो प्रॉब्लम सोनम, आप कल भी मतलब रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं. ठीक है, गुड. थैंक यू शानू, एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. सी यू ऑल टू. ठीक है.